Hey guys, how are you doing? Today in this video, we are going to talk about BioE3 policy. But before getting into details of this policy, its significance, we are going to talk about biotechnology basics, and we go back to 1972 when this guy, namely Paul Berg, he was leading a team, and they said they have attached, two bits of DNA from different organism, right? So this is the reading. If you can see through it, it says biochemical methods for inserting new genetic information into DNA of simian virus 40 and circular SB40 DNA molecules with plasmid of E. coli bacteria. Let me tell you quickly what they have done. Actually, they have attached, DNA of two different organism, है ना? तो this is called what? इसी को सिंपली हम क्या कहते हैं? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. This is called basically rDNA, recombinant DNA technology, 1972. And let me tell you, this is the foundation of biochemistry. This is the foundation of biotechnology, right? This is the जिसको कहते हैं संगम ऑफ जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना? तो ये फाउंडेशन किसका है? बायोटेक्नोलॉजी. If you go through this word biotechnology, bio mean living things. Living things are used for technology. Technology मतलब productions of goods and services, and for that matter for agriculture, है ना? For medicines, medical के field में. और हम लोग सुनते किस चीज के बारे में? GMO बोले तो genetically modified organism. Everything is based upon at least the basics of rDNA or recombinant DNA technology, which we are going to talk about in this video, and then quickly we are going to move on to BioE3 policy. This guy, he got 1980s Nobel Prize in chemistry, 1980 Nobel Prize in chemistry, है ना? तो इनको क्या मिला था? 1980s का क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था. और ये नोबेल प्राइज के बाद अगर आप देखोगे तो फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ही इज ऑल्सो सपोज टू बी फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना? तो जेनेटिक, एक मिनट इसको करेक्टली लिख दो, जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, राइट? व्हाट दे डिड एक्चुअली, दिस SB40 डीएनए को इस्टीरिया कोलाई डीएनए के साथ क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, दोनों के डीएनए बन गए. एंड दिस कंबाइंड डीएनए or the making of this combined DNA technology is called a recombinant DNA technology. Let's go through the basics of how it works. There are certain steps, the first step is, तो R जो DNA टेक्नोलॉजी है या recombinant DNA टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. Recombinant DNA technology के essentially there are 4 steps, and let me tell you what are these 4 steps. First step is, आपके पास कोई क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिज्म होना चाहिए. जैसे फॉर दैट मैटर कोई तो ऑर्गेनिज्म होगा या कोई सेल होगी. दिस इज अ सेल, टिपिकल सेल, एंड दिस सेल हैज दिस क्रोमोसोम्स, राइट? ऐसे क्रोमोसोम्स, है ना? अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर बाहर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी. तो दिस डीएनए हैज something called this has DNA. This is the DNA of our interest, है ना? And therefore it is called DNA fragment. में अपने पास क्या है? इंटरेस्ट या जीन ऑफ इंटरेस्ट. जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है DNA फ्रैगमेंट्स. तो वी हैव दिस DNA फ्रैगमेंट्स. इफ यू रिमेंबर बेसिक्स ऑफ DNA, है ना? DNA में क्या होता है? बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, इस टाइप का मॉलिक्यूल है. वॉटसन एंड क्रिक डिस्कवर्ड इट. Go through the basic video which you will find in the playlist here in our channel, जहां पर बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स हैं. तो मैं आपको बता देता हूं, डीएनए इस टाइप का क्या है? इसमें बेस पेयर होते हैं, इस टाइप का स्केलेटल होता है. किसका? पेंटोज सुगर, है ना? राइबोज. एंड डीएनए में कौन सा था? डीऑक्सीराइबोज. पेंटोज सुगर होती है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं, जिसपे 4 बेस जुड़े होते हैं, ATCG, है ना? तो एडेनिन के सामने क्या होगा? थायमीन. गुआनिन के सामने क्या होगा? साइटोसिन. दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस. यहां से द फंडामेंटल, अगेन द बेसिक आइडिया, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ जीन इज व्हाट? हेरिडिटरी के लिए क्या है? फंक्शनल यूनिट है. तो इस फ्रैगमेंट्स में क्या है? कोई जीन है जिसको क्या बोलते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना. यू हैव जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड देन you have to molecular seizure की मदद से, with the help of molecular seizure, you have to cut this
क्या बोलते हैं इसको, कट दिस सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट को काटने के लिए आपको क्या चाहिए, जेनिट मॉलिक्यूलर क्या चाहिए, सीजर चाहिए। एंड हु वाज डूइंग दैट मॉलिक्यूलर सीजर के लिए देयर वाज समथिंग कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स, क्या बोलते हैं उनको, रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम। एंड दिस गाय हिज नेम वाज हर्बर्ट, हिज नेम वाज हर्बर बॉयर, हिज नेम वाज हर्बर बॉयर, है ना। ये भी क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में क्या थे, प्रोफेसर थे। और इन्होंने क्या किया, व्हाट ही डिड एक्चुअली बाय यूजिंग I mean he recognized restrictive enzymes which can specifically, they can cut DNA at a specific points, and this thing is called basically molecular, this is the idea. So this guy, his name is Herbert, तो मैंने Herbert Boyer, है ना, he was professor at University of California. What he did, he recognized specific रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स को, ये ध्यान से देखना, द एंजाइम कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट सेम साइट, है ना, और इनको क्या बोलते हैं, बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल यू हैव दीज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स लाइक एटीसीजी है ना, ए टी 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 सी सी जी 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 ए है ना। इंफॉर्मेशन क्या होती है, डबल होती है किसमें, डीएनए मॉलिक्यूल्स में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रेप्लिकेशन। ए के सामने क्या होगा, टी ए टी, सी के सामने सी जी, है ना। तो एडेनिन एंड थायामीन हैव टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगेन गो थ्रू द बेसिक वीडियो ऑफ बायोकेमिस्ट्री। साइटोसिन हैज एंड गुआनिन, they are attached with 3 hydrogen bonds, they are H bonds, hydrogen bonds, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे करते हैं, लिटिल मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, जस्ट गो थ्रू द बेसिक आइडिया। तो इसका मतलब क्या है, सी के सामने जी, सी के सामने जी, जी सी जी ए टी इस तरह से। तो ये जो मॉलिक्यूलर सीजर है, ये एंजाइम्स है, इट कैन कट इट, है ना, इट कैन कट इट लाइक दिस। तो उसको काटने के लिए अब जैसे क्या था, ई कोलाई बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरियाज हैव दीज enzymes with them, and one of his students extracted one particular restrictive enzyme from restriction enzyme from E. coli bacteria. Therefore, it is named as E. coli endonuclease. There are two types of nuclease, endo and exo. तो इसको क्या बोलते हैं, E. coli bacteria, Escherichia coli bacteria, E. coli bacteria endonuclease, है ना, एंडोन्यूक्लियस वन, है ना। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईसीओआर। अच्छा, इसको जब काटा है, दिस डीएनए सेगमेंट वाज कट लाइक दिस, तो अगर आपको पता है यहां पर टी है तो यहां पर क्या होगा, सी, एटी सी जी, है ना। यहां पर ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए के सामने टी, टी के सामने ए, एटी राइट। और यहां से काटोगे तो एटी, है ना, दिस इज एटी, है ना, ऑटोमेटिकली, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। दिस इज द वे restriction enzymes works actually. Again, there was another guy, his name was Stanley Cohen. He was Stanford University professor or scientist, basically, this guy, Stanford Cohen. His name is Stanford Cohen. If this pen is not visible, then I can write it with the help of other pen, है ना। तो Stanley Cohen, he was Stanford University scientist, Stanford scientist. What he was studying? He was studying plasmid, है ना। तो ये क्या कर रहे थे, he was studying plasmid. Plasmid are basically ringlets of DNA. They are ringlets of DNA, है ना। DNA की ringlets होती हैं ऐसी, and this is called plasmid. ये कहां पर पाई जाती है, in some bacteria, है ना। Some bacteria has these ringlets of DNA. They are extrasomal DNA. Extrasomal मतलब extra chromosomal, है ना। तो क्रोमोसोम के अलावा जो होती है, तो extra chromosomal DNA, they have some properties like they are autonomously replicating, है ना, ये खुद replicate होते हैं। and the most important thing about these plasmid actually, what they can do, they can be inserted and removed. They can removed and inserted in bacteria cell. That is the beauty of these plasmids. I hope you have got and this is called sometimes horizontal gene transfer, that is possible. तो एक प्लाज्मिड से, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, these plasmids can be transferred and this process is called conjugation, है ना।
This process is called conjugation. It means direct cell to cell contact से, तो डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट से आप क्या कर सकते हो, इन प्लाज्मिड्स को सेंड कर सकते हो. अब अगेन इंटरेस्टिंगली है ना, तो सो दिस गाय कोहेन स्टैनली, ही वाज स्टडीइंग प्लाज्मिड स्मॉल रिंगलेट्स एंड दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया. And what he developed method of removing and inserting plasma. What he developed basically, he developed methods of removing, removing plasmid from one organism, one bacteria, plasmids from one bacteria and reinserting, bacteria, and reinserting it into another bacteria. और इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं. तो फिर से इन दोनों लोगों ने क्या किया, दिस गाय है ना हार्बर बॉयर एंड स्टैनली कोहेन, इन लोगों ने क्या किया, मिलके they teamed up together and with the help of this molecular seizure, same process, these sticky ends were cut, these are sticky ends, है ना. और इस sticky ends के बाद क्या किया, there is something called ligase, ligase are basically now what you have to done by basically cutting gene of interest by using molecular seizure, you have sticky ends and with the same restriction enzymes you are cutting off this plasmid and now this DNA fragments, gene of interest, this gene of interest maybe ये वाला है ना. तो this gene of interest is inserted, यहाँ पे चिपका दिया उसको with the help of DNA ligase. and DNA ligase क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है which is loosely you can say DNA tape, है ना. और जैसे ये इसके साथ इंटीग्रेट हो गया, this now new molecule is called recombinant DNA molecule. That is the basic idea behind this thing which is called recombinant technology. And the now recombinant plasmid, this recombinant plasmid can be again transferred with this the method developed by Stanley Cohen to another bacteria, and bacteria are basically they can be used as a manufacturing plants for what, these desired gene, desired gene से desired proteins बनेंगे. For example insulin, है ना. You can also make GMO, right. You can use it for agricultural purposes like insects or pesticide resistant, insect resistant plant, है ना. जैसे हम बीटी ब्रिंजल के बारे में पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल. तो दिस इज द आइडिया ऑफ. Now you can ask me the following question: why bacteria are used basically? So bacteria have very good properties, and for example, if you were to talk about E. coli bacteria, that is the model bacterium, rod-shaped bacteria होता है, normally cohabits in the colons of all mammals including humans, right? Okay, and it makes for example vitamin B1, B3, vitamin K from undigested food. This E. coli bacteria. Sometimes it cause deadly diarrhea, but otherwise it is very useful bacteria. It has chromosome which is free in the cytoplasm. It is very easy to open open the cell of this E. coli bacteria because it has peptoglycan. Peptoglycan is the extra layer, and then it has cell membrane which can be opened comparatively very easily. This bacteria or other bacteria, similar bacteria, can be grown in the mineral salt, water, sugar sources. It can liquid culture can be stored in refrigerator, for weeks, or even it can be frozen for 20 years or more at minus 70 degrees Celsius, right? This is the beauty of these E. coli bacteria. They are easy. They are used because genetic analysis is much easier. They have around 4,000 genes, and humans have approximately 25,000 to 40,000 genes, right? So this is the beauty. Yeast can be also used because yeast is single celled eukaryotic, similar traits like human cells, है ना. तो it has multiple chromosomes, a nucleus and cell organelles. तो इसमें भी क्या होता है, एक्स्ट्रा प्लाज्मिड होता है जो क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसके पास होता है, राइट. राउंड होम्स, फॉर एग्जांपल सी लिगन, they have got Nobel Prize recently in the previous year for study of Parkinson's and Alzheimer's diseases because they have a small number of neurons. So for the neurology, this C. elegans is one of the main model ऑर्गेनिज्म, राइट. तो जो डीएनए का वेक्टर होता है वो क्या होते हैं, बेसिकली वेक्टर्स आर कैरिंग, दे आर बेसिकली कैरिंग व्हीकल्स, है ना. तो ये बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक है. नाउ आई थिंक वी शुड गेट इनटू द बेसिक्स ऑफ दिस BioE3 एंड आई होप यू हैव गॉट अंडरस्टूड.
So essentially there are four basic steps. First step is what? You have DNA fragments which you have to remove because it has got what is called gene of interest. Then what you are going to have? You have plasmid where with the help of molecular seizures you can cut some part of its DNA, है ना? फिर उसको क्या करता है? कटिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट के बाद क्या करते हैं? उनको डीएनए फ्रैगमेंट्स आर दे आर ज्वाइंड टुगेदर and finally you have recombinant plasmid. Now this is the idea of biotech basics. Now let's go to the BioE3 policy, and BioE3 policy is basically, and just a minute. तो जो BioE3 policy है, what it does actually, it has three terms: biotechnology, living things, and living things की मदद से टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, but for what? For economy, environment and employment. This is what is the government of India's policy, which has approved by cabinet. And what is it? What is the initiative? It has, it will foster high performance manufacturing. What is this going to do? This will encourage scientific, industrial and societal advancement in the times to come, in the future, near future. Other benefits includes environmental preservation and employment creation. All right. Okay. Let me tell you what are the guiding principles. Guiding principles are, they are talking of the green growth. Okay. So BioE3, biotechnology and biotechnology for what? Biotechnology, just a minute. Biotechnology for economy, environment and employment policy. It talks about, in the Union Budget 2023, they talked about green growth. Green growth means simply climate, climate change and environmental sustainability को ध्यान में रखते हुए क्या करना? Economic growth करना. Then we have net zero carbon economy. Again, it has to do with the climate change. We have also talked in the previous video, lifestyle for environment. Life, go through this video also when we talk about green hydrogen, है ना? तो green hydrogen, grey hydrogen, brown hydrogen पे एक वीडियो मैंने बनाई है. Go through this video, you will understand about this. Then 2024 interim budget also talked about bio manufacturing and bio foundry. Bio foundry simply means when bio manufacturing meets with AI or automation basically, है ना? Automation, or in other words robotics. तो अगर रोबोट्स की मदद से हम क्या कर रहे होंगे? बायो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, देन इट इज कॉल्ड बेसिकली, है ना, बायो फाउंड्री. बायो मैन्युफैक्चरिंग सिंपली मीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी. So why this is important for the country? To foster future with more sustainable, innovative and responsive global changes, potential to create new jobs, right? This is why employment is there. Third one, and intensify entrepreneurial momentum. जो अमृत काल की बात हो रही है till 2047, है ना, 100 साल जब भारत की देश को आजाद हुए हो जाएंगे, तो उसका भी ये क्या है? विजन है, राइट? दिस इज द विजन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. Why? What do we aim to achieve? Steer India on the path of accelerated green growth, which I have talked. Foster surge in employment and intensify entrepreneurial momentum, है ना, job employment, job creation basically, and achieve bioeconomy targets and national economic goals for 2047, which is called अमृत काल, है ना. तो उसको क्या बोलते हैं? अमृत काल बोलते हैं, ठीक है. तो सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में इसमें बात हो रखी है. व्हाट इज सर्कुलर इकोनॉमी? लीनियर मॉडल इज व्हाट? टेक, मेक एंड डिस्पोज. तो अगर जो लीनियर मॉडल होता, नॉट सर्कुलर मॉडल होता, तो लीनियर मॉडल इज बेस्ड अपॉन टेक, है ना, मेक एंड डिस्पोज. टेक, मेक एंड डिस्पोज. बट सर्कुलर इकोनॉमी इज बेसिकली, इसमें क्या क्या आ जाता है? रीयूज, रिपेयर, है ना, रिसाइकलिंग. दीज आर द pillars of circular economy. And why it is important? Because it talks about finite resource consumption. Finite resource consumption. तो आपके जो resources हैं, they are finite. You cannot end up with, depleting all the resources. This is why they talk about finite resource consumption. Thematic sector of the manufacturing. So one, bio-based chemical and enzymes catalyzing greener reactions. These are the thematic sectors. Functional foods and smart proteins. Taste with cruelty. Precision biotherapeutics. Therapeutics का मतलब होता है medicines के लिए, है ना, medicines के लिए living organism को use करना. For example, insulin production, best example. This is protein, enzyme. This is protein, which is hormone basically, produced by pancreas naturally. Climate resilient agriculture, CRA. I am going to make one video on this CRA, why it is important. Krishi that makes earth happy. So we can make a short video on this also. If you want me to do that, please do comment. Carbon capture and utilization again for climate change. Futuristic marine and space research with the help of biomanufacturing, right? So bio artificial intelligence hubs, bio manufacturing hubs, international core जो collaborations हैं,
skilling and human resources, regulatory, enabling the interministerial coordination. That is the part of this. Why biomanufacturing? Because climate change है ना, तो global threats requires concerted sustainable intervention. What are the threats? Like climate change, unsustainable material consumption, excessive resource utilization, and waste generation. These are the threats, and for them, these threats, they demand for such kind of intervention, and which can be met through biomanufacturing. How? Biotechnology है ना, bio मतलब living, technology which I have talked, for example, recombinant technology, a promising approach. Why? Because living factories and machines can be made, engineer flexible designs, they can reclaim resource from waste, effective utilization of in situ resources है ना, जहां पर उनका natural जगह होती है. What? Manufacturing that uses biological system. Why? What does it work? Leveraging living system to create new sustainable efficient manufacturing processes. Like we are talking about bacteria, they are yeast bacteria, C elegans है ना, versatile process है, scalable, efficient, cost effective and reduced environmental impact, initiative to advance medical treatment promoting bio based product and supporting innovation of various products. तो ये बायो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात होती है, राइट. ये थीमेटिक एरियाज है ना, जैसे डीबीटी दिल्ली में, एनआईआई न्यू दिल्ली, यू डोंट नीड इट फॉर यूपीएससी बट जस्ट गो थ्रू इट है ना, थोड़ा सा एक बार आपको आइडिया हो जाएगा. पूरे इंडिया में बात हो रही है. मेन मुद्दा क्या है? द बायो E3 पॉलिसी क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड है ना. तो आप देखोगे, स्ट्रेंथन एंड अलाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम बाय फोस्टरिंग पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंटर मिनिस्टीरियल कोलैबोरेशंस एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. ध्यान रखना है ना. तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आ गया, इनोवेशन ड्रिवन सपोर्ट एंड R&D है ना, इनोवेशन ड्रिवन सपोर्ट टू R&D एंड एंटरप्रेन्योरल अक्रॉस थीमेटिक सेक्टर्स, एक्सेलरेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन. हाउ? By setting up bio-enabler hubs with access to technology platform and infrastructure. Again, third point is foster surge in employment and intensify entrepreneurial momentum. So job creation is one of the main tasks of the government, for countries like India. Harmonize regulatory reforms with global standards है ना, effective and transport patent system to use genetic resources है ना, तो उनका पेटेंट करवाना भी क्या है, important, right? Promote sustainability, for example, climate change है ना, तो these are the things. ठीक है. हार्नेस रिजनरेटिव बायो इकोनॉमी विद एथिकल एंड बायोसेफ्टी कंसिडरेशन. तो दीज आर द पिलर्स. तो बायोटेक्नोलॉजी के जो सेलिएंट फीचर्स क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा टेक्नोलॉजी है, एक्सेलरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन. देन ग्रीन ग्रोथ. ग्रीन ग्रोथ इज बेसिकली अबाउट क्लाइमेट चेंज है ना. फिर आप देखोगे जॉब क्रिएशन, फैसिलिटेटिंग एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज स्किल्ड वर्कफोर्स एंड प्रोवाइडिंग अ सर्ज इन जॉब क्रिएशन. देन नेट जीरो इमिशन, अगेन क्लाइमेट चेंज है ना. सर्कुलर इकोनॉमी, ताकि जो लीनियर मॉडल है टेक मेक एंड डिस्पोज, उससे हम दूर जा सके. वी कैन रियूज, रिपेयर, रिसाइकल एंड एंड अप विद लेस कंजम्पशन. एंड फ्यूचर fostering and advancing future that is more sustainable, innovative and responsive for global challenges. and विकसित भारत, अमृत काल तक क्या करना, भारत को टॉप लेवल पर पहुंचा देना है ना. दिस इज द BioE3 policy. Before we wind up this video, let's go through these basic questions. The BioE3 policy marks a strategic shift towards a regenerative and innovation driven bioeconomy in India. Discuss how the policy seeks to strengthen the science technology innovation ecosystem, accelerate biotechnology commercialization and promote sustainable and inclusive economic growth. Critically examine the challenge related to regulation, intellectual property, biosafety and ethical governance in realizing its objective. This is the question for you. If you really like this video, don't forget to hit like, share button and you can also comment which video you want me to make. Don't forget to subscribe our channel. Thank you so very much. See you guys until next time. All the very best. Thank you.